Hello children, how are you? I hope you all are doing well and starting well and साइंस में अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हो बिकॉज अब आपको समझ में आ रहा है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं या जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू साइंस. Okay, and now you are able to relate to them very well. Alright children, so now we are going to talk about temperature and its measurement in this chapter. Okay, so lesson objectives are, we are going to talk about hot and cold, we are going to talk about temperature, how are you going to measure the temperature, okay, laboratory thermometer, clinical thermometer, maximum and minimum thermometer. Okay, so these are different methods by which we are going to measure the temperature. Okay, so when we touch a bottle taken out of a refrigerator, it feels cold, whereas a cup of freshly prepared tea feels hot. जब हम चीज़ें फ्रिज से निकालते उनको टच करते तो वो ठंडे होते हैं. We can feel that they are cold, whereas जो चीज़ हम पकाते हैं ओके और उसको रखते हैं जैसे चाय बनाई या खाना पकाया उसको जब हम टच करते तो हम फील करते हैं दैट इट इज़ हॉट. Now the perception of how cold or hot an object is determined by its temperature. So कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है हमें कैसे पता चलता है उसके टेम्परेचर से. So for instance, when a utensil is placed on a burning gas stove, its temperature increases and it becomes hotter. So जब गैस हम लिट कर देते हैं बर्तन रखते हैं उसके ऊपर और उसको you'll see कि धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे वो गर्म होता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है. Okay, and that's when it becomes hotter. Okay, conversely, when it is removed from the heat source, its temperature starts to decrease and it eventually cools down. But जब हम उसको गैस से हटा देते हैं उसको साइड में रखते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होते जाता है. Okay, and then वो cool down हो जाता है. So similarly, when water that is heated is removed from the heat, its temperature decreases and it becomes colder. So दैट इज़ अ सिंपल फिनोमिनन कि जब हम पानी को भी गैस से हटा देते हैं मतलब जो हीटिंग है उसका बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है. ओके, नाउ हॉट एंड कोल्ड. इन एवरी डे लाइफ वी एनकाउंटर अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ विच आर हॉट व्हाइल अदर्स आर कोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, टी इज़ हॉट बट आइस इज़ कोल्ड. सूप इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. A mug of hot milk is hot, whereas fruit juice is cold. Even among hot objects, some can be hotter than others. Similarly, among cold objects, some can be colder than others. So, जब भी हम कोई चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें उसका टेम्परेचर पता चल जाता है कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है. So, जैसे चाय जो है वो गर्म है, ओके, आइस ठंडा है, सूप गर्म है, आइस ठंडा है. जब गरम दूध होता है ओके दैट मीन्स इट इज़ हॉट. ओके, देन फ्रूट जूस ठंडा होता है. ओके, सो अब ये गरम चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें हैं कुछ ज़्यादा ही गरम होती है ओके या कुछ मॉडरेट गरम होती है. एंड देन कोल्ड थिंग्स में भी इफ यू लुक टच द आइस इट इज़ कोल्डर देन द बॉटल ऑफ वाटर दैट इज़ देयर. Okay, so because it is in the deep fridge and it is like really now a solid thing, so when you touch it, it is much more colder than the other things in the fridge. Okay, so we usually determine whether an object is hot or cold by touching it. जब हम उसको touch करते हैं तब हम उसको feel करते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है. So provided temperature is not too extreme, so we are able to touch them only because when the temperature is bearable for us. अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो तो हम उसको हाथ भी नहीं लगाते. We start blowing air, okay, so that it cools down and then we can touch them to feel how hot it is. क्या आप बहुत गर्म चीज़ में हाथ डाल सकते हो? नहीं. गीज़र का पानी भी जब हम टेस्ट करते हैं तो भी हम डर डर के उंगली डालते सो दैट वी नो दैट वेदर इट इज़ बहुत गर्म होगा तो चटका लग जाएगा है ना, और बहुत ठंडा हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली योर हैंड फील्स नम.
है ना। इसके वजह से हम उसके टेम्परेचर को टेस्ट करते हैं, उस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होगा या एक्सट्रीमली कोल्ड होगा तो वी आर नॉट एबल टू touch it. Okay, so however our sense of touch may not always be reliable in accurately assessing an object's true temperature. Let's explore this further. But अब वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसका टेम्परेचर क्या है, वो हमें सिर्फ टच से नहीं पता चलता. Yes, we can say that it is too hot, but exactly कितना गर्म है या exactly कितना ठंडा है, we will not be able to gauge it. वो हमें क्या करना पड़ेगा, we will have to measure it, right? So we have to measure the temperature to get the exact temperature. Okay, so let's explore further and let's go to temperature now. So when we touch a pan that has been placed on a burning gas stove, it feels very hot, indicating that the temperature of the pan is high. Conversely, a pan from the refrigerator feels very cold, signifying that the temperature is low. Thus, the temperature of an object reflects its degree of hotness or coldness. So, temperature जब ज़्यादा होता है, that means things are hot, and temperature जब कम होता है, that means things are cold. Clear? Now, a high temperature means that the object is very hot, while a low temperature means it is quite cold. For instance, boiling water has a temperature of 100 degrees Celsius. So, boiling पानी, अगर उबलता हुआ पानी जो है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. So, that means it is really very high. Okay, and it feels very hot. In contrast, जब melting ice होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, which is low and it feels cold to touch. तो that is also extremely low, और उसको जब हम touch करते तो मतलब it feels really cold. Clear? Now, to measure the temperature, we use a device that is known as a thermometer. A thermometer has a scale marked on it to indicate the temperature. The most common scale used on thermometers is the Celsius scale. Now, the temperature is expressed in degrees Celsius. In this notation, the small circle represents degree and the letter C stands for Celsius. Therefore, degree Celsius is read as degrees Celsius or simply degrees C. Okay? So, temperature measure करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, एक डिवाइस की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर. ओके, सो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है थर्मामीटर की. अब थर्मामीटर अगर आपने देखा होगा, आजकल तो हम लोग डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, बट पुराने ज़माने में या फिर टिल अ फ्यू ईयर्स अगो वी यूज्ड टू यूज़ अनदर थर्मामीटर जिसमें एक मर्क्यूरी लेवल दिखती थी. ओके, और उससे हमें पता चलता था कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर. क्लियर? नाउ the most common scale used on thermometers is the Celsius scale. अब temperature is expressed in degrees Celsius. So ये भी जो Celsius word जो है, okay, this was discovered by Anders Celsius. Okay. So according to Anders Celsius, he had discovered that 100 degrees Celsius becomes the boiling point for heating, okay, purposes. So यहाँ पे जब 100 degrees Celsius पे पहुँचते हैं तो all the germs and whatever it gets killed. So that becomes the boiling point. So that is the reason why he had said that it has to be 100 degrees Celsius. Similarly, 0 degrees Celsius means it is the coldest point. Okay, and then anything below that is colder than that. Alright, so these were the points that he had suggested, and basis on that, okay, Celsius name was given. Okay, so now temperature is expressed in Celsius, degrees Celsius. तो उसको हम बोलते हैं degrees Celsius. तो डिग्री का एक साइन होता है, एक स्मॉल पॉइंट जैसे एक राउंड सर्कल जो बनता है, and then it is expressed as degree Celsius. Alright, now measuring temperature. How do you measure the temperature? There are two types of thermometers, laboratory thermometers and clinical thermometers. So दो टाइप के thermometers होते हैं, एक होते हैं laboratory वाले और दूसरे हैं clinical वाले.
both are based on the Celsius temperature scale and use mercury to measure temperature. दोनों भी सेल्सियस का ही स्केल यूज करते हैं और उनमें मर्क्यूरी होती है. Okay, so when heat is applied to the thermometer bulb containing mercury from the object whose temperature is being measured, the mercury expands and rises within the glass tube. So जब भी जिसमें भी वो ग्लास, आप जो थर्मोमीटर का बल्ब है, ओके, उसको जब हीट लग जाती है तो उसके अंदर जो मर्क्यूरी होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, ओके, एंड वो उस ग्लास ट्यूब में बढ़ने लगती है. तो जो एक्सपैंड होकर वो जिस पॉइंट पे पहुंच जाती है, दैट इज द टेम्परेचर. Okay, so this principle is used to measure the temperature of the object. Let's start by examining the construction and functioning of a laboratory thermometer. Laboratory thermometer. A laboratory thermometer is designed to measure temperature in a science laboratory. It consists of a long glass tube with a thin bow and a glass bulb containing mercury at the lower end. So इसमें इस थर्मोमीटर में आप देखोगे it is like a long glass tube, लंबी ग्लास ट्यूब है, ओके, विथ अ थिन बोर एंड अ ग्लास बल्ब. उसके अंदर एक ग्लास बल्ब होता है, एक बोर होता है और इसके अंदर होते हैं मर्क्यूरी, ओके, उसके नीचे की तरफ. The top end of the glass is sealed after removing the air. उसके अंदर की हवा निकालने के बाद उसको सील किया जाता है. The tube is calibrated in degrees Celsius with common laboratory thermometers ranging from -10 degrees to 110 degrees Celsius. The range indicates that the thermometer can measure temperature as low as -10 degrees and as high as 110 degrees Celsius. So उसका limit है, it is not 0 to 100 degrees, but they have given a limit of -10 degrees to 110 degrees. ठीक है, for example, between the temperature markings of 0 degree Celsius and 10 degree Celsius, there are typical 10 small divisions. Each division represents 1 degree. Okay, allowing the thermometer to provide precise readings in 1 degree increment. The silvery thread of mercury in the narrow glass tube indicates the temperature of the object in which the thermometer's bulb is placed. Okay, now what are the precautions? हमें precautions क्या लेने पड़ते हैं when we are using a laboratory thermometer? एक, वी हैव टू होल्ड इट वर्टिकली. अगर आप उसको वर्टिकली नहीं होल्ड करोगे तो उसका मेजरमेंट गलत हो सकता है. सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली अपराइट एंड नॉट टिल्टेड वाइल मेजरिंग टेम्परेचर. हमेशा उसको स्ट्रेट पकड़ना है, वर्टिकली. Okay, 2 is proper immersion. The thermometer bulb should be fully surrounded by the substance whose temperature is being measured. Okay, it should not touch the sides or bottom of the container. So जो थर्मोमीटर बल्ब जो होता है, जो भी आप कोई भी सब्सटेंस का ये चेक कर रहे हो, टेम्परेचर चेक कर रहे हो, तब द थर्मोमीटर बल्ब जो है इट शुड बी फुल्ली सराउंडेड बाय दैट सब्सटेंस. ओके, एंड वो जो है वो नीचे या साइड्स को टच नहीं करना चाहिए. क्लियर? देन दैट मीन्स यू हैव टू होल्ड इट in the air till the substances till the temperature bulb that is there feels that substance completely. Read while immersed. So उसको आप जब immerse करोगे तभी आपको उसको पढ़ना है. Okay, read the thermometer while its bulb is still in contact with the substance. Level and sight. Ensure the level of mercury is aligned with your line of sight when reading the thermometer. So आप जो उसको देख रहे हो तो आपकी नज़रें उसमें बराबर से होनी चाहिए, आपकी लेवल उसके साथ होनी चाहिए. Do not hold the thermometer by the bulb. Okay, थर्मोमीटर को उल्टा नहीं पकड़ना है, उसको ऊपर की तरफ से पकड़ना है because the bulb is downwards. Okay, handle with care. Handle the thermometer carefully to avoid breakage as it can easily shatter if struck against the hard object. तो उसको बहुत हल्के हाथ से पकड़ना है. ओके, एंड बहुत केयरफुली पकड़ना है, नहीं तो वो टूट जाएगा. ओके, नॉट फॉर बॉडी टेम्परेचर. सो ये वाला जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को नहीं नापता.
Okay, laboratory thermometer is not suitable for measuring human body thermometer temperature. Once removed from the mouth, the mercury level drops quickly due to cooling, leading to inaccurate readings. For measuring body temperature, use a clinical thermometer which is designed to retain the mercury level even when removed from the mouth. क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसको जब हम उस सब्सटेंस से जिसको हम लोग नाप रहे उससे हटा देते तो तुरंत ठंडा हो जाता है. ओके, सो इसके लिए आपको तभी मेजर करना है जब वो उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में रहता है. वंस इट इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट तो वो कूल डाउन हो जाता है और आपकी रीडिंग जो है वो गलत हो जाएगी. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए भी आप वो नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप उसको से आर्मपिट में रखोगे और निकालोगे तो तुरंत आप देखोगे कि वो ठंडा हो गया. At the same time, it has to be held upright also. So that is not possible. Okay. So that is the reason why for human body temperature हम लोग use करते हैं clinical thermometer. Clear? Now, do you know a clinical thermometer is also known as a doctor's thermometer. Features a kink. Okay, उसमें एक kink होता है, that is a narrow, sharp bend or constriction. Okay, in its bore, which prevents the mercury from falling quickly after removal from the body. Means उसके अंदर एक narrow, sharp bend होता है. Okay, या constriction होता है, जो वो बोर के अंदर होता है, जिसकी वजह से जैसे लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर का जो है टेम्परेचर इमीडिएटली मतलब मर्क्यूरी जो है इमीडिएटली ड्रॉप्स डाउन, तो इसमें वो ड्रॉप इमीडिएटली ड्रॉप नहीं होती है. ओके, जब आप बॉडी से उसको हटाते हैं वो इमीडिएटली ड्रॉप नहीं होती है. इसकी वजह से you can get the accurate reading of how much fever you have, or if you don't have fever, okay, and what is your body temperature. Okay, now clinical thermometer. A clinical thermometer is specifically designed to measure human body temperature, which is normally around 37 degrees Celsius. When a person has fever, their body temperature rises, and a clinical thermometer is used to detect this change. This type of thermometer can be used by doctors or at home to measure body temperature. So body temperature को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्रीज सेल्सियस. ओके, बट अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको बुखार है. Okay, a clinical thermometer consists of a long glass tube with a thin uniform bow and a glass bulb containing mercury at one end. A small shining thread of mercury is visible within the tube. Okay, so उसके अंदर एक glass, it is a long glass tube. उसके अंदर you will have a thin and uniform bore, जिसके अंदर there is a glass bulb जिसमें mercury होती है. Okay, at one end. अब एक small shining thread दिखेगा आपको of mercury. It is very easily visible. Okay. Now the other end of the tube is sealed after the air is removed. The temperature scale on the clinical thermometer ranges from 35 degrees to 42 degrees. Okay. Now the clinical thermometer is distinguished from a laboratory thermometer by two special features. So how do you distinguish it? दो special features होते हैं जिससे हम दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर में. सो देर इज अ किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर. किंक क्या है? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक. किंक इज लाइक अ रेस्ट्रिक्शन. ओके, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इन इट्स बोर दैट प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग बैक क्विकली वंस इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ओके, सेकेंड है उसका स्केल रेंज. The temperature scale of a clinical thermometer is specifically calibrated for measuring body temperature ranging from 35 degrees to 42 degrees. So, clinical thermometer का जो range है वो है 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Okay? Now, and that of laboratory is minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Clear? Now, to measure a patient's body temperature using a clinical thermometer, follow the following steps. Okay? One is clean the thermometer. और जब भी हम बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं सबसे पहले तो हमें उस थर्मोमीटर को क्लीन करना है. So how do you do that? Wash the thermometer thoroughly with an antiseptic solution.
Okay, if an antiseptic solution is not available, then use clean water. So उसको wash करना है with clean water या antiseptic solution like a Savlon. Clear? Okay, now prepare the thermometer. How do you prepare the thermometer? Okay, आपको thermometer को tube से पकड़ना है, not where the bulb is. Okay, and you have to gently shake it once or twice so that the mercury thread falls up below 35 degrees. Okay, then how do you measure the temperature? Place the thermometer bulb under the patient's tongue. Okay, hold the thermometer in place gently and ensure it stays there for about 1 minute. Okay, उसके बाद आप thermometer को patient के tongue के नीचे या maybe in the armpit. Okay, depending on different doctors use it in different places like tongue, either tongue or armpit. Okay, and then you leave it for a minute. Read the temperature. Remove the thermometer from the patient's mouth. Hold the thermometer horizontally. अब उसको thermometer को हम vertically नहीं hold करते, horizontally hold करते, and then you rotate it slowly until the mercury thread is visible. Read the temperature at the level of the top of the mercury thread. This will give you the patient's body temperature. So अब mercury thread कहाँ पे रुका है वो आपको देखना है. Okay, जहाँ पे रुका है वो body temperature है patient का. Clear? Now, what are the precautions that you can take for using a clinical thermometer? You have to clean the thermometer after every use and before use also. Okay, so wash the clinical thermometer before and after use, preferably with an antiseptic solution. So thermometer को आपको wash करना है before use as well as after use and preference रहता है antiseptic solution का. You have to check the mercury level. Ensure that the mercury level in the thermometer is below the 35 degrees Celsius mark before using it. जब भी आप use करोगे आपको उसका temperature देखना है, 35 degrees के नीचे होना चाहिए वो. Okay? Then read the temperature properly. Hold the thermometer horizontally and align the mercury level with your line of sight for an accurate reading. उसके बाद आप reading लेते वक्त उसको horizontally पकड़ोगे, आपके eyes और thermometer एक ही level में होने चाहिए ताकि आप accurate reading ले सको. Okay, avoid holding the bulb. उसके bulb को touch मत करो. The reading will go wrong. Okay, never hold the thermometer by the bulb when reading it, as this can cause the bulb to break. Okay, reading will be also wrong and bulb will also break. It is a very delicate thing. Handle with care. Handle the thermometer gently to avoid breaking if it is accidentally hits the hard surface. Clear? Now, a clinical thermometer typically has two temperature scales marked on its glass tube. One for Celsius and one for Fahrenheit. Okay, so आप देखोगे कि हम लोग generally जब भी temperature measure करते हैं तो हम बोलेंगे 98 है fever या 100 है fever. So 100 and 98 is not in the Celsius scale. Celsius scale में क्या है तो 35 to 42 degrees है. तो इसमें क्या है, इसमें है Fahrenheit scale. Okay, so when we are talking about how much fever is there when we talk about 98 degrees or 100 degrees, that means it is used on the Fahrenheit scale. Okay, now the Celsius scale is used to measure temperatures in degrees Celsius. For example, the difference between two big marks on the Celsius scale such as 37 degrees and 38 degrees, they represent 1 degree. There are usually 10 small divisions between these marks, meaning each small division represents 0.1 degree Celsius. Therefore, a clinical thermometer can measure human body temperature with an accuracy of 0.1 degree Celsius. The Fahrenheit scale, हम लोग use करते हैं Fahrenheit scale, मतलब when we are talking about it, we are using it on the Fahrenheit scale. So, which is also marked on the thermometer, and it ranges from 94 degrees Fahrenheit to 108 degrees Fahrenheit with a normal body temperature of 98.6 degrees Fahrenheit. जब आप सेल्सियस में देखते हो तो उसका जो वेरिएशन होता है वो 1 डिग्रीज का होता है, 0.1 डिग्रीज का होता है. सो इसके लिए उसका एक्यूरेसी जो है वो
0.1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ लाइक इट इज़ इवन टेकिंग स्मॉल पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन। सो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 degrees Fahrenheit. So while the Fahrenheit scale was used in the past, India has now adopted the Celsius scale for temperature measurement. Thus, it is recommended to read the Celsius scale when using a clinical thermometer. हालांकि लोगों ने पीपल यूज टू यूज़ द फ़ारेनहाइट स्केल इन द पास्ट, ओके, अब दे आर रिकमेंडिंग टू यूज़ द सेल्सियस स्केल इन इंडिया. The normal body temperature of a human is typically around 37 degrees Celsius. However, this does not mean that every healthy person has a body temperature exactly at 37 degrees Celsius. Rather, this value represents the average body temperature of a large group of healthy individuals. Individual body temperatures can vary slightly above or below this average and still be considered normal. So, normal body temperature typically 37 डिग्रीज के अराउंड होता है, ओके. हाउएवर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि द पर्सन हु हैज़ अ 37 डिग्री सेल्सियस इज अ हेल्दी पर्सन, ओके. सो दिस वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज बॉडी टेम्परेचर, ओके, ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल बॉडी टेम्परेचर कैन वेरी, ओके, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ओके, एंड स्टिल कंसिडर्ड एज नॉर्मल. Therefore, as long as a person is healthy, a body temperature slightly higher or lower than 37 degrees should not be a cause of concern. Clear? अब देखते हैं कि how does a clinical thermometer work? When a clinical thermometer is placed in a patient's mouth, the body heat of the patient is transferred to the mercury inside the thermometer bulb. So जब वो टंग के नीचे रखा जाता है तो बॉडी हीट जो है वो उस मर्क्यूरी पे ट्रांसफ़र हो जाती है जिसको हमने थर्मोमीटर के बल्ब में डाला है, ओके. नाउ दिस हीट कॉजेस द मर्क्यूरी टू एक्सपैंड, increasing its volume. So because of this heat, the mercury starts expanding, okay. As a result, the mercury rises in the thermometer tube. The higher the fever, the more heat is transferred, leading to a higher mercury level and thus a higher temperature reading. So mercury level जो है, okay, जैसे जैसे आपका fever बढ़ते जाता है, okay, तो mercury level भी it starts increasing, okay, it moves to a higher mercury level and thus the temperature reading also becomes higher. Clinical thermometers are designed specifically to measure human body temperature, which falls within a narrow range, okay. So it is generally used, clinical thermometers are used for human body temperature, okay, जो एक particular range में fall होता है. They are not suitable for measuring high temperatures because they can get damaged if the temperature exceeds their designated range. So दूसरे किसी चीज़ के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो थर्मोमीटर डैमेज हो जाएगा when the temperature exceeds that range, that specific range, okay. For instance, if a clinical thermometer is used to measure the temperature of hot milk, the mercury may expand excessively, causing the thermometer to break due to the lack of extra space in the glass tube. So इसके लिए हम लोग clinical thermometer से we cannot gauge or calculate the heat of the hot milk, वो फूट जाएगा. Therefore, it is important to avoid exposing clinical thermometers to high temperatures, such as by placing them in hot sunlight or near flames, as this can also lead to breakage. इसके लिए हमको thermometer को भी we have to keep it away from things that have higher heat, okay. जैसे hot sunlight हो गया या flames के पास हमको उसको नहीं लेके जाना है. We have to keep it in a cool and moderate place. Clear? Now let's do a comparison between clinical thermometer and laboratory thermometer. Similarity between clinical and laboratory thermometers is that both of them use mercury in glass technology. So दोनों में mercury use हो जाती है in the glass, okay. However, they have distinct difference. Temperature range. Clinical thermometer has a narrow temperature range, generally or typically 35 degrees Celsius to
42 डिग्री सेल्सियस एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर वी हैव ऑलरेडी डन दिस, कितना है? राइट, इट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 degrees Celsius. Okay, second difference also we've already done. Yes, that's about the kink. Okay, ट्यूब में जो किंक होती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होती है और कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है उसको in its tube to prevent the mercury from flowing back, okay, into the bulb. Whereas a laboratory thermometer उसमें किंक नहीं होती है, इसके लिए उसको तुरंत उस चीज़ से हटाते हैं तो mercury goes back, okay, it flows back to the bulb. Okay, now accuracy. Clinical thermometers offer higher accuracy, measuring temperature to the nearest 0.1 degrees Celsius compared to laboratory thermometers, which generally measure with an accuracy of up to 1 degree Celsius. Clear? Now, what are maximum and minimum thermometer? The maximum temperature of the day typically occurs in the afternoon, while the minimum temperature is usually recorded in the early morning. To monitor these variations, meteorologists use a special instrument known as maximum and minimum thermometer. So, maximum temperature आप देखोगे typically afternoon में जो है maximum temperature होता है. Okay, and minimum temperature is in the early morning. Now आप देखोगे कि mornings are pretty cool as compared to the afternoons, and again then in the evenings, okay, the temperature starts dropping. तो afternoon में जो है temperature is higher. Okay, so in order to monitor this, meteorologist ने maximum and minimum thermometer use करना शुरू किया. Okay, so this device automatically records both the highest and the lowest temperatures reached over a 24-hour period. So in thermometers की help से the meteorologist can know the temperature of the entire day. 24 hours में कैसे temperature vary हुआ है. Okay, so the maximum and minimum temperatures reported in weather forecast on TV and in newspapers are measured using this thermometer. So इस thermometer का use करके they have started, they are able to predict the thermometers, the temperatures that are minimum and maximum during the day. Clear? Now what are the key terms? Thermometer. What is a thermometer? It is a device to measure temperature. और temperature क्या है? तो a degree of hotness or coldness measured on a definite scale. Clear? So I hope children now you know how the temperature is measured using different types of thermometers. Okay? एक होता है clinical thermometer, दूसरा है laboratory thermometer, and तीसरा है minimum and maximum thermometer. So these are the different types of thermometers which are used by different types of people to measure different temperatures. I hope you followed this chapter very well. You're going to read this chapter all over again and then get on to the back exercises and complete them. Alright children, get going.